employee data. Okay, so what are the things that are there in SAP HCM? Like as of now, what we have discussed, like so far, we have discussed different submodules are there. We have discussed about end user screen, configuration screen. So what are those things which are there already in system? Like one I know, okay, organization management, correct? There are different types of organization units I can create, or we can simply call it as organization objects. So in which I can create org units. What else I can create? I can create what else? Jobs, Jobs I can create. What else? cost centers, Cost centers I can create. What else? positions, Positions I can create. What else? And few like types of things I can job. create, right? And what Yes, else we have discussed so far? What else apart from organization objects? That employee personal structure, employee structure, correct? And enterprise structure. so employee structure is also known as personal structure. So don't get confused Yes, in an interview yes, that if anyone asks you that okay, tell me the personal structure. So it is the yes. same. Okay. So what we have En- created employee groups, enterprise structure. employee groups and subgroups. Correct. Yes. Enterprise structure. In enterprise structure, what we have created? Like clients, company code. Client. Client we have not create. Client we don't create. Client is generally already there in every system, but it's the Company highest code, structure. personal area, Company personal sub code, areas, PA, personal area, PSAs, what else? sub areas, personal sub areas, Yes, PA, PSAs, what else? onboarding details. Onboarding details we have not created as of now. No, like what we have seen. No, no. Payroll area? Payroll area can Yes, be? payroll. What is payroll area? Payroll area, it means weekly, bi-weekly or Yeah, I mean, but payment structure. To be very yes. precise, payment structure. So payment structure, to configure the payment structure, we have to have the period parameter, right? We have learned that. We have to have the period parameter. See, Yes. all of these details, I can be able to see everything, all of these other details, I can also be able to see without the help of info type as well. Correct? Like I can, like, take an example of this one. Uh, just a second. So take an example of payroll area. Can't I go to PA03 and can see the payroll area? I'm not utilizing any type of an info type. Am I utilizing any type of an info type over here? क्या मैं कोई info type use कर रहा हूँ क्या इसमें? नहीं कर रहा हूँ ना? Can't I go to PPOS or PPOC underscore old and check what are the different types of organization objects which are available? Can't I go to K01 and check the different types of cost centers which are available? Can't I check the personal sub area or oh sorry, can't I check the employee grouping, subgrouping in V underscore? Which table was that? Which table was that? That groupings table? Oh, okay, I'm not. Okay, have I taught the groupings? Okay, maybe I'm not taught the groupings No, yet. no, yet. sir. Sorry. Okay, so can't I check the employee group and subgroups in SPROs? Right? Yes. There is a menu path we follow. Can't I check the enterprise structure in SPROs? I can check. So all of these things I can check. Correct? Yes, sir. But when we talk about info type, to maintain master data of employees. So only employee related details, like employee related personal details. No, right? So here when I'm talking about employee data, so I'm talking about inclusive of all the things. And when I'm talking about employee data, so I'm specifically targeting that okay, these things will be there. But these things will be pointed out towards an employee. Let's say I want to check an organization. See, every kind of an operation that I will perform in an SAP will be employee related only. Correct? I mean, Yes, sir. somewhere these organization unit or enterprise structure or employee group and all of these things has to be applied to an employee, right?
कहीं ना कहीं तो मैं एम्प्लॉय को ही ये सारी चीजें असाइन करूंगा ना किसी एम्प्लॉय को. एम आई राइट? इज इट बिकमिंग डिफिकल्ट? No, sir. अरे बता दो, इज इट बिकमिंग डिफिकल्ट? वी No, डोंट वी See, I'll try to explain it in another sense. देखो, जब भी मैं PA20 की बात कर रहा हूँ, अच्छा PA20 PA30 हम क्यों यूज करते हैं ये बताओ. PA20 PA30 हम क्यों यूज करते हैं? PA30 या PA20 change टी कोड PA20 डिस्प्ले के लिए PA20 PA30 PA20 डिस्प्ले के PA20 लिए डिस्प्ले PA30 और चेंज करने के लिए. PA30 चेंज. पर ये यस सारा का सारा PA10 एम्प्लॉय के लिए. एम्प्लॉय रिकॉर्ड व्यू करने के लिए ही करता है. करेक्ट? हाँ. करेक्ट. यस. सो जैसे देखो, अभी मैं PA20 के अंदर हूँ. लेट्स से आई एम टेकिंग दिस एम्प्लॉय. I'm taking let me take some another employee. Let's take this employee. Let's take this employee. So अब जब मैं आपके सामने ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड डिटेल्स की बारे में बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड डिटेल्स, तो कैसे देख सकता हूँ मैं किसी भी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड डिटेल्स? How do I know that this employee belongs to which organization unit, or this employee was hired on which position? How do I know? Okay, देखो. I'll go into the organization management info type, that is 0001. I'll go into the display and see. Here I can see that he was hired on a default position 9999999. His org unit is this. So this is how I can check. How can I check which personal area and sub area he belongs to? He belongs to this personal area and sub area. So देखो, at the back end, मतलब क्या है इसका कि at the back end के अंदर जो कंपनी कोड, पर्सनल एरिया, सब एरिया कॉन्फ़िगरेशन जितना भी किया हुआ है, वो किसी एक एम्प्लॉय स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही किया जाता है. ओके. सो लाइक जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप के बारे में भी बात हो गई, एम्प्लॉय सब ग्रुप के बारे में बात हो गई, या पेरोल एरिया के बारे में बात हो गई. All of these configurations are generally done at the back end to fulfill the employee related needs. Okay. जो भी हमको employee related चीजें चाहिए सिस्टम के अंदर, I mean information can be classified into किस कितने तरह के में मैं इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर सकता हूँ. एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को मैं कैसे क्लासिफाई कर सकता हूँ? एक तो होगी पर्सनल डिटेल्स, राइट? एक तो होगी पर्सनल डिटेल्स. व्हाट एल्स? और एक वो होगी जो डिटेल्स मैं दे रहा हूं एम्प्लॉय को. दोज डिटेल्स आर लाइक व्हाट? ऑर्ग यूनिट, करेक्ट? यस. पेरोल एरिया, करेक्ट? देन Yes. जब अगर मैं अटेंडेंस भी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जब अपन अटेंडेंस भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो दोज अटेंडेंस, सी दीज आर नॉट हिज पर्सनल डिटेल्स, राइट? दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिटेल्स. Organization. Yes. Organization as in like organization word I'm using in a generic sense. I'm not saying that organization management. Organization I'm using in a generic sense. That की payroll area हो गया, attendance हो गया, absence हो गया, उसकी salary हो गई, basic pay हो गया जो भी, या फिर मैं जो उसको bonus देने वाला हूँ वो हो गया, या फिर उसकी tax related details हो गई. All of those things, these are the I mean you can say that these are the organizational specific things, स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन. और पर्सनल डिटेल्स क्या हो गई भाई? उसकी बैंक डिटेल्स हो गई, दैट इज हिज पर्सनल डिटेल्स, राइट? दैट इज हिज पर्सनल डिटेल्स. और क्या हो गया? कॉन्टैक्ट नंबर हो गया उसका, दैट इज ऑल्सो हिज पर्सनल डिटेल्स. व्हाट एल्स? अच्छा, यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? थोड़े मेरे को आइडिया दो.
एजुकेशनल डिटेल्स भी रहेगा ना, पर्सनल वो तो यहाँ डिटेल्स पे में. आएगा ना. ओके, एजुकेशनल डिटेल्स करेक्ट. व्हाट एल्स? प्रीवियस एम्प्लॉय डिटेल्स, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स. एड्रेस, एड्रेस. यहाँ क्या हो गया? टैक्स रिलेटेड डिटेल्स के अलावा, अरे एम्प्लॉय आईडी तो अपन भूल ही गए. वन ऑफ द मोस्ट important यस, aspect, which we एम्प्लॉय. also call it as personal number in the system. Okay, यहाँ पे his date of birth. रिपोर्टिंग मैनेजर आएगा ना, Reporting manager will be coming over here. ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, as per the organization, right? In real life, he is not reporting to him. नो. Correct. This is the specific to organization, right? So, like now you got the difference. Now you got, because, see, reason I'm explaining this again and again because this is very very important aspect of the things, like understanding the business point of view. कि यार ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, कल को हम वर्क स्केड्यूल कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, उसके बाद हम हॉलिडे कैलेंडर कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, उसके बाद हम एब्सेंसेस अटेंडेंसेस कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे. एब्सेंसेस अटेंडेंसेस कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे. उसके बाद हम पेरोल स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे एक ये हो गया, बट उप्स, जैसे देर आर थिंग्स लाइक वेज टाइप्स, सो पेरोल स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस लाइक वेज टाइप्स, सो उस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस भी हम देखेंगे. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वाई वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन. जरूरत क्या है? वाई वी आर डूइंग दिस कॉन्फ़िगरेशंस? ताकि अपन सिस्टम के अंदर मल्टीपल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को हायर कर सके और सेग्रीगेट कर सके और उनका पेरोल अलग अलग तरीके से रन कर सके और उनको अलग अलग अटेंडेंसेस अपन अप्लाई कर सके. वो अपन कहाँ अप्लाई करते हैं? इन्फो टाइप के अंदर अप्लाई करते हैं. मतलब ऑल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो मैं देख सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने सारा के सारा कॉन्फ़िगरेशन किया है, बट with all these configurations that I will be doing will be, मतलब end result क्या होगा इन सारी के सारी configurations का? What is the end result? End result क्या है हमारा? जितना भी मैं configuration system के अंदर कर रहा हूं, मेरा end result क्या है? To solve or to simplify, or to solve. बताओ बताओ. It's already in the name, right? मॉड्यूल के नेम में ही है वो सारी के सारी चीजें कि हम करते क्या है इसके अंदर. When we call it SAP HCM, when we call it SAP HR, so what is the problem that we are solving? ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट. Correct. To solve, simplify employee centric issues, employee specific issues at a large scale. अपनी कंपनी तो लार्ज स्केल पे काम कर रही है ना. एट अ लार्ज स्केल पे हमको एम्प्लॉय स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करना है. किसके लिए सॉल्व करना है? फॉर अ पर्टिकुलर क्लाइंट मतलब इन अ जेनरिक सेंस में फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, कोई कंपनी वो सोल्यूशन यूज कर रही होगी जिसमें उनको क्या करना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि ठीक है एम्प्लॉयज का पेरोल रन करना है, एम्प्लॉयज का टैक्स कैलकुलेट करना है, एम्प्लॉयज का टाइम मैनेजमेंट पूरा के पूरा डिसाइड करना है, एम्प्लॉयज को एक एब्सेंसेस अटेंडेंसेस ये सारी के सारे इश्यूज को सॉल्व करना है, एम्प्लॉयज को कैटेगराइज करना है कि कौन से सैलराइड है, कौन से आवरली है. करेक्ट. करेक्ट. तो ये सारा यस का सर. सारा कॉन्फ़िगरेशन मैं किसके लिए करूंगा? एट द एंड मेरे को इन्फो टाइप के इश्यूज को ही तो सॉल्व करना है. सी दिस, दैट्स व्हाई दिस इज द बैकबोन. मतलब आपका एंड गोल यही होगा
कि ये जितना हम फसाना यहाँ पे कर रहे हैं, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, वी आर ऑल डूइंग टू सिंप्लीफाई द इन्फो टाइप रिलेटेड इशू. इन्फो टाइप रिलेटेड इशू मतलब क्या? मास्टर डेटा इश्यूज ऑफ द एम्प्लॉय. करेक्ट. जैसे कि मेरे पास में रिक्वायरमेंट आ गई कि मेरे को कह रहे हैं कि ठीक है, एक एबीसी कंपनी है. एबीसी कंपनी के अंदर दो तरह के एम्प्लॉयज होने चाहिए, एक सैलराइड होना चाहिए, एक आवरली होना चाहिए. अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर मी. क्या करूंगा इसके अंदर में? कॉन्फ़िगरेशन तो मैं यही करूंगा. कॉन्फ़िगरेशन तो मैं एम्प्लॉय ग्रुप सब ग्रुप लेवल पे ही करूंगा ना. एक सैलरी क्रिएट कर दूंगा, एक आवरली क्रिएट कर दूंगा. बट उसको असाइन कहाँ करेंगे? राइट. उसको इन्फो टाइप में तो असाइन करेंगे एम्प्लॉयज के लिए. जैसे कि अब जैसे ये वाला एम्प्लॉय ले लिया, तो अब मैं देख रहा हूँ कि इज अ रेगुलर एम्प्लॉय और यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग से एक सब ग्रुप बना के रखा हुआ है एग्जीक्यूटिव नाम का. तो ये तो थोड़ी अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने की हुई है. ऐसे करते हैं बहुत सारा. इट डिपेंड्स ऑन अ क्लाइंट also, like what kind of a configuration that you want to perform. So it depends upon to the client also, that what kind of a configuration that you want to perform. Similarly, if I take it, let's say if I'm taking any another employee, let's say I'm taking this employee. So देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एम्प्लॉय ग्रुपिंग कुछ और है और सब ग्रुपिंग कुछ और है. बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि सारे के सारे एम्प्लॉयज को, जो भी मतलब सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ डेमो सिस्टम. A demo system can be used by 1000 2000 of people, और यहाँ पे सारा के सारा एक्चुअल क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है. करेक्ट. जब आप किसी कंपनी में जाते हैं और अगर वो SAP सिस्टम यूज कर रहे हैं, देन यू कुड बी एबल टू फिगर इट आउट दैट ओके, okay, these are the actual configurations. But a demo system will give you the idea about okay how the configurations can be performed. In an actual system it will always be like that कि ठीक है, एक salaried है, एक hourly है, एक trainee है, और maybe retiree and some of the other groupings based on to their problem statement या जो भी होगा. But whenever I get any kind of a problem statement, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, जैसे लेट्स से अगर मेरे को एब्सेंसेस ही अलग अलग तरह की क्रिएट करनी है या अटेंडेंसेस ही अलग अलग तरह की क्रिएट करनी है, सो दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर मी. कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होगा? सारा के सारा एसपीआरओ में होगा. ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, वी हैव डन, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस वन, we have done most of those things. We will do most of those things in SPRO only. So सारा के सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का सोल्यूशन SPRO में ही किया जाएगा. बट वो एप्लीकेबल कहाँ होगा? इन्फो टाइप्स के अंदर एप्लीकेबल होगा. राइट. आई विल बी एंटरिंग एन पर्सनल नंबर एंड मैं चेक करूंगा कि उसको कौन सा डिटेल असाइन है, लाइक कौन सा एम्प्लॉय ग्रुपिंग उसको असाइन है. ओके, उसकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, उसको पेरोल एरिया कौन सा असाइन है, ऑल दोस थिंग्स. या अगर मैं नया हायरिंग कर रहा हूँ तो उसको क्या मेरे को असाइन करना है. एनी डाउट इन दिस वन? No, sir. नो. ओके. सो लेट्स कम to the important aspect which is known as okay, authorizations. Authorizations. So this word authorizations, what do you understand by that? ये authorizations का मतलब क्या हुआ? And then there is a word which is a specific authorizations. Okay, let's keep it to authorizations only. Can you Google it and can you let me know what is the authorization all about? Yeah, if you have an idea, you can let me know now what is an authorization all about generally. क्या होता है? What is the definition of authorizations? It's a real time environment topic. ये आज का जो टॉपिक है, it has nothing to do with the configuration that you have to perform. आपको इससे रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं परफॉर्म करना है. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ रियल टाइम परस्पेक्टिव कि रियल टाइम चीज़ें कैसे वर्क करती है. व्हाट इज एन ऑथराइजेशन? डेफिनेशन क्या है It is the ऑथराइजेशन?
Process of giving someone permission to have Slow. access to something. Process of Giving someone giving someone permission to permission. have access. Permission. It means access के लिए permission जो है वो authorization. Process of giving someone permission To have access to something. to have access to something. To have access to It means to something. give their official permission. There is to something. Or can we say everything? Like official. Can we no, say no, everything as well? No, official. Official. Official permission. So is it Shivani or Sakshi who said that? Sakshi. Shivani, do you agree with this thing? Shivani, is this fine? Is this a fine statement to make? Process of giving someone official permission to have access to something? Okay. So देखो अब I'm going all the way back, okay? सर ऑथराइजेशन मतलब वही होता है ना परमिशन जो ऑफिशियल परमिशन रहेगा लाइक कॉपीराइट्स जो ऐसे भी रहते हैं Sorry, who was speaking? साक्षी Yes. So to some extent, I mean, as a definition wise, it's absolutely correct. Now let's understand the context of this thing in an SAP. Okay. So हमने authorization तो Okay. समझा कि okay authorization ये है, but with respect to SAP, what it means. So what we are talking about over here, authorizations in SAP. Authorizations yes. in SAP. अब देखो उसका मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? अभी देखना, एक ही टी कोड है, उसको मैं ट्राई करूंगा अलग अलग सर्वर्स में यूज करने का. आई हैव 2 सर्वर्स एज ऑफ नाउ. So let's say I'm first utilizing this server of mine. See, try to understand. This is a client number 001. ठीक है? This is a different user ID and this will be the different user different password that I'll be using. Server कौन सा है? BNM server है. Okay? BNM server. So let's first log in. So I've logged in. There is a T code PFCG. Can you see this T code on your screen? Like अभी दिखाई दे रहा है जब मैं इसको टाइप कर रहा हूँ तो. I'm trying to access this T code as of now. Yes. What it is giving me? What is the error that I'm getting? Here, error I can see over here. You are not authorized to use transaction PFCG. Correct? Yes. Correct? There is another. So we first tried out with PFCG. PFCG. There is another one. Let me try another one. Let me see SUIM. If I'm able to use SUIM or not. Okay, I can use SUIM. I can use SUIM. Let me go back. सर PFCG नहीं PFCG. क्या एरर था? Yeah, I'll execute it one more time. You are not authorized to use this transaction okay. PFCG, correct? Yes. Correct? Yes. Okay. And now I'm logging off from the system. To log off, what can I do? Which T code I can use to log off? /ex. करेक्ट. मैं पूरी तरीके से सिस्टम के बाहर आ जाऊंगा. मैं आ गया बाहर, वो वाली स्क्रीन बंद हो गई. ठीक है. अब देखो मैं दूसरा सर्वर यूज कर रहा हूं. आई एम यूजिंग अ डिफरेंट सर्वर ओवर हियर with a different ID. See, this is a client 800. Server name is EH7. Okay. Now let me try the same T code over here, PFCG.
ओके, ठीक है. Yes. I'm hitting enter. I'm into this T code. Am I getting any error? No. I'm not getting any error. Correct? Yes. So this is the fundamental thing that generally the basis thing also a basis person also do. मैं Yes. यहाँ पे जो यूजर आईडी मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले एक यूजर आईडी यूज की. मैंने कौन सी यूजर आईडी यूज की? मैंने कौन अच्छा ओके. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूजर आईडी आल्सो? मैंने यूजर आईडी यूज की HCM यूजर 01 समथिंग लाइक दैट. ओके. एंड फिर मैंने एक और यूजर आईडी अभी यूज की विच इज 17 HCM 14. So both of them are different user ID. Yes. राइट और नॉट? अरे बाबा, अभी मैं जिस यूजर आईडी से लॉगिन किया हूँ that is this one, right? You also have your own user ID with you, right or wrong? You have a user ID with you or not, right? Yes. You don't have? अरे आपको भी तो यूजर आईडी दिया होगा ना लॉगिन करने के लिए. वो पासवर्ड जो रहेगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड, करेक्ट? Yes. How do you log in to your Gmail ID? There is a Gmail ID, right? Yes. Then only to that you will put your password. Similarly with Facebook, you'll use a specific ID and then you'll put your password, correct? Yes. So in SAP also there is a user ID and there is a password through which you will go over there and perform all the activities, correct? Yes. So like in this case I was using this ID, HCM user 1, and then I was using some another password. And then I've checked, okay, I'm using this credential with this server, okay, /n ex. I'm out of this one and now I'm using a different server. I'm using a very very different server and I'm using a different ID and password. Okay. Okay. Now see, try to understand what is actually happening. In SAP, for the different user IDs, we can actually provide a different types of permissions. Okay. Shall I write it down? In SAP, we can provide different types of authorization. We can also say permissions based on to the different user IDs. The different user IDs. Okay. So here also the segregation also come like from a very very beginning session. Remember what is a landscape? We have spoken of something which is called as landscape. Landscape क्या है? In a real-time environment, what should be the landscape? We have spoken of something which is called as development. We must Arrangement have of server. quality. Have we spoke something about quality? Q&A system? Yes, quality server, development, Sandbox, correct. Production server. Correct. Quality. Production. See, in production, I don't have access to SPRO. Nobody will be giving access to SPRO in production. Nobody will have access. Okay, this is a real-time thing that I'm talking about. This is a very real-time thing. Why we don't have SPRO access in production? Because it comes under the organizational. No, this is actually used for to perform all the business activities. Yes. Right? Yes. Okay, देखो सारा के सारा जो देखो how can I explain this?
So try to understand this part. Uh, Okay. mm, okay. Do you have a mobile or vehicle? Vehicle? Do you guys have vehicle? कौन सा vehicle चलाते हो आप? Moped scooty. हाँ हाँ, कौन सा नाम तो होगा ना कुछ ना कुछ. Axis 125. Sorry, Axis 125. Access 125. Yes. Access 125, right? Yes, sir. So it's by Suzuki, correct? Yes. सुजुकी. अभी सुजुकी एक्सेस 125 जो आपने खरीदी है वो आपने शोरूम से खरीदी है, करेक्ट? Yes. शोरूम, राइट? बट जब सुजुकी इस मोपेड को बना रही होगी तो उन्होंने कुछ टेस्टिंग्स भी की होंगी, करेक्ट? कि उन्होंने ऐसे ही मार्केट में लॉन्च कर दिया. टेस्टिंग के बाद. टेस्टिंग, सो दोज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, राइट? वो अच्छा ऐसा तो नहीं है कि जो उन्होंने टेस्ट किया होगा वही आपको दे दिया होगा. एग्जैक्टली exactly वो तो आपको नहीं दिया होगा ना. दे हैव क्रिएटेड अ न्यू वन, राइट, फॉर यू, और दे हैव गिवन यू द टेस्टेड वन. No. नो, राइट? सो टेस्टिंग कहाँ होती है सारी के सारी चीज़ों की? क्वालिटी डिपार्टमेंट में. जो सुजुकी का क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे सारी के सारी टेस्टिंग होगी. सुजुकी का क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे सारी के सारी टेस्टिंग होगी. एंड एट द सेम टाइम यू विल नॉट गेट दैट प्रोडक्ट. आपको ये प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया गया होगा, आपको तो फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, राइट? विच इज एक्चुअली टेस्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स, एंड सारा के सारा उसके अंदर कोर्स करेक्शन करके उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर बना के देन दे हैव लॉन्च्ड द सेम व्हीकल टू एवरीवन, बट नॉट दैट स्पेसिफिक व्हीकल. अच्छा, जब डेवलपमेंट भी हुआ होगा तब उन्होंने अलग अलग चासीज बनाई होंगी और अलग अलग इंजन के मोल्डिंग्स बनाई होंगी, राइट? करेक्ट? Yes. या Yes. अलग अलग बैटरीज को यूज किया होगा. आर दे प्रोवाइडिंग द सेम थिंग्स टू यू? No. नो, राइट? सो दैट इज द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि सारी के सारी चीजें चेक करके यूज कर रहे हैं, राइट? Yes. ओके. तो अब मुझे एक बात बताओ, आपकी स्कूटी में कुछ एकदम से कुछ बहुत बड़ा फ्लॉ हो गया, मान लो कि चैसिस टूट गई, एंड सेम थिंग इज एक्चुअली हैपनिंग इन हंड्रेड्स ऑफ स्कूटर्स. सो क्या सुजुकी वो हंड्रेड्स ऑफ स्कूटर्स को डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भेजेगी क्या? नहीं. नहीं, आप तो सर्विस सेंटर पे जाओगे ना, बट वो सारे हाँ. के सारे हंड्रेड्स ऑफ स्कूटर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे क्या? नहीं. नहीं जाएंगे, राइट? दे विल डू समथिंग. ओके, जो उन्होंने सेल नहीं किया है प्रोबेबली वो वाले स्कूटर्स लेंगे और वापस से R&D चालू करेंगे, करेक्ट? Yes. सो इट वर्क्स वेरी वेरी सिमिलर, जब आप प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हो तो प्रोडक्शन सिस्टम इज ओनली टू डू बिजनेस एक्टिविटीज. अभी बिजनेस एक्टिविटीज क्या हो गया कि देखो यहाँ पे लाइव एम्प्लॉइज हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं सारे के सारे लाइव हैं, उनका एक्चुअल बैंक अकाउंट वगैरह सब सेव है यहाँ पे, उनके एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशंस वगैरह सब यहीं से होंगे, अगर मान लो बाय मिस्टेक अगर किसी ने प्रोडक्शन के अंदर कुछ भी जाके थोड़ा सा भी टेम्परिंग कर दिया तो व्हाट विल हैपन? एंड हियर लेट्स से आई एम हैविंग 10,000 एम्प्लॉइज जो कि उस सिस्टम पे हैं. कुछ भी टेम्परिंग, थोड़ा सा भी टेम्परिंग कर दिया तो क्या होगा? ऑल दीज 10,000 एम्प्लॉइज विल गेट अफेक्टेड, करेक्ट? क्योंकि देखो इनको तो सैलरी इसी सिस्टम से मिल रही है ना, इसी सिस्टम के अंदर उनका बैंक अकाउंट और सारी के सारी चीजें सेव है, सारा के सारे कैलकुलेशन तो इसी सिस्टम से होके उनको सैलरी और जो भी उनका अटेंडेंस है, एब्सेंस है, सारा के सारा सिस्टम यहीं से हो रहा है, राइट? व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस? भाई यहाँ पे तो
चीज़ें बनाई जाती है, डेवलप की जाती हैं, कॉन्फ़िगर की जाती है। डेवलप एंड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्या होता है, जिन चीज़ों को डेवलप किया गया है, कॉन्फ़िगर किया गया है, उसको टेस्ट किया जाता है कि इज इट वर्किंग करेक्टली और नॉट। टेस्टिंग ऑफ ऑल फंक्शनैलिटीज। बट एक्चुअल सारी के सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है साक्षी। क्वालिटी क्वालिटी में। नहीं, क्वालिटी में तो टेस्ट हो रहा है ना। टेस्टिंग, हाँ, अरे, प्रोडक्शन में हो रहा है। प्रोडक्शन में सारा के सारा लाइव एम्प्लॉय डेटा है, लाइव आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम हाँ, सेइंग लाइव। एक, आई मीन इट्स लाइक जैसे कि अगर आप एक एप्लीकेशन पे काम, अभी व्हाट्सएप का एक नया फीचर आया है, सो यू कैन सी सम डिफरेंस इन अ यूआई, कि उनके यूआई में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, राइट? सो नाउ दे हैव रोल आउट दोस चेंजेस टू द प्रोडक्शन। अब वो प्रोडक्शन में उन्होंने रोल आउट किया है तभी तो हमको दिख रहा है वो। बट जब वो हाँ, डेवलप कर रहे होंगे तो वो बैकएंड का कोड अपन को थोड़ी ना दिखेगा जो उन्होंने बनाया था उस टाइम पे। मतलब वो डेवलप तो अभी कर रहे होंगे ना 1 या 1.5 साल से, वो टेस्ट भी कर रहे होंगे फिर वो, कि ओके हाउ इट विल लुक इन प्रोडक्शन। बट प्रोडक्शन में तो अपन ही देख पा रहे हैं। अब अगर मान लो, चलो ठीक है, यही वाले एग्जांपल को मान लो, व्हाट्सएप में अगर मान लो कि उनसे कुछ मिस हो गया, सो कैन दे मेक एनी चेंजेस इन प्रोडक्शन डायरेक्टली? नो। अगर व्हाट्सएप डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा फिर? अगर प्रोडक्शन में चेंज करते करते व्हाट्सएप डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देयर बिलियंस ऑफ यूजर्स विल गेट अफेक्टेड, राइट? कि व्हाट्सएप कैसे डाउन हो गया एकदम से, यस, राइट? यस सर। Okay. So maybe you will once again watch this recording, then you'll get much more idea about okay what is actually the production system. So generally इसी के लिए प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर किसी को भी चेंज एक्सेस नहीं होता है, ठीक है? चेंज एक्सेस मतलब आप यस, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं टेस्ट। कर सकते हो। हाँ। कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो वहाँ पे। अच्छा हाँ, वहाँ पे आप थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर सकते हो फंक्शनैलिटी को लेके, बट आप कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब यू कैन नॉट राइट कोड, यू कैन नॉट डू एनी एसपीआरओ कॉन्फ़िगरेशंस इन प्रोडक्शन। You can do it in development, you can also do it in Q&A, but it is not advisable to do it in Q&A। अच्छा, बट ये सेग्रीगेशन कहाँ से आएगा? मतलब कि मैं प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाऊँ, मैं सिर्फ कुछ ही चीज़ें Q&A में एक्सेस कर पाऊँ और डेवलपमेंट में मैं सब कुछ एक्सेस कर पाऊँ। ये चीज़ें यूज़र आईडीज़ को जो रोल्स असाइन किए जाते हैं उसके थ्रू आता है, रोल्स। ओके, रोल्स। सो जितनी भी यूजर आईडीज प्रोडक्शन में होती हैं, जितनी भी यूजर आईडीज, ऑल यूजर आईडीज ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट हैव कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस, डज नॉट हैव कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस। किसी कंपनी का सीईओ भी होगा तब भी उसको कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस नहीं होता है, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द बिजनेस। कुछ भी अगर मान लो सिक्योरिटी फ्लॉ हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, सो एम्प्लॉइज विल गेट हैम्पर्ड। Okay, maybe their personal details will get lost, or maybe some cyber attack can also happen. So that's why they don't have a configuration access in production. जो प्रोडक्शन रिलेटेड सर्वर होता है वहां पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस नहीं होता है। दे जस्ट हैव ओनली बिजनेस रिलेटेड एक्सेस, जो कि यही सारा के सारा होता है, PA20, PA30, 30। एंड यू नो थिंग्स लाइक अगर मेरे को पेरोल खाली रन करना है तो उसके लिए मैं पेरोल रन ऐसे करूँगा। अगर मेरे को कोई टाइम रिलेटेड स्टेटमेंट्स को रन करना है, मैं रन करूँगा सिर्फ, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन नहीं। कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा डेव में होगा, क्वालिटी में टेस्ट होगा, और वो फिर अल्टीमेटली प्रोडक्शन में मूव किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती कहाँ से? ये सारी के सारी चीज़ें ऑथराइजेशंस के थ्रू ही होती है। एंड विच आर दोज टी कोड्स? कौन से वो टी कोड्स हैं ऑथराइजेशंस के जो ये सारी के सारी चीज़ें करते हैं? दीज दीज आर द टी कोड्स दैट डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वन इज द PFCG। PFCG के अंदर जाके मैं अलग अलग रोल्स जो भी होते हैं उसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। रोल्स रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस, रोल्स रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस।
कि कौन सा टी कोड डिस्प्ले एक्सेस होना चाहिए, कौन सा टी कोड बिल्कुल भी एक्सेस में नहीं होना चाहिए, अलग अलग यूजर आईडीज के लिए, अलग अलग यूजर आईडीज के लिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने दिखाया कि इसके अंदर मैं पीएफसीजी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बट इसके अंदर मैं पीएफसीजी यूज कर पा रहा हूँ। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो मुझे रोल असाइन करके रखा हुआ है उसके अंदर पीएफसीजी नॉट एक्सेसिबल टू मी, नॉट एक्सेसिबल टू मी। यहाँ पे पीएफसीजी इज एक्सेसिबल टू मी। पीएफसीजी इज एक्सेसिबल टू मी। सो पीएफसीजी और जनरल इन जनरल द ऑथराइजेशन इज एक्चुअली रिलेटेड टू द रोल रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, अच्छा अब ये जो रोल्स हैं, ये सारा के सारे रोल्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है पीएफसीजी के अंदर। अब पीएफसीजी के अंदर तो ठीक है कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, बट अगर मुझे ये चेक करना है कि जो मेरी यूजर आईडी है, लेट्स से इन दिस केस अभी मैं जैसे यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर ये चेक करना है कि जो मेरी यूजर आईडी है जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ सिस्टम के अंदर, अगर मुझे ये चेक करना है कि इसका रोल कहाँ है, या अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी यूजर आईडी को कौन कौन सा रोल असाइन है, तो वो मैं कैसे चेक कर पाऊंगा? मैं प्रोफाइल्स के अंदर चेक कर पाता हूँ उसे, और उसके लिए मैं एक ट्रांजैक्शन यूज करता हूँ SU01। एंड जनरली अगर मुझे उस ट्रांजैक्शन को डिस्प्ले मोड में एक्सेस करना है तो आई कैन यूज इट SU01D। ओके, अब देखो अभी ये मेरी यूज़र आईडी है जिसके थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मुझे ये देखना है कि मेरे पास में एक्सेस किस किस तरह के हैं। क्या मेरे पास में सभी तरह के एक्सेस हैं? क्या मैं सारे के सारे टी कोड्स को यूज़ कर सकता हूँ क्या? सो टू चेक दैट आई विल गो इनटू द SU01D। ओके, आई विल एंटर, क्या एंटर करूँगा यहाँ पे मैं? मेरी यूज़र आईडी। सो आई एम एंटरिंग माई यूज़र आईडी। अच्छा, यूज़र आईडी इटसेल्फ इज अ वेरी यूनिक इन नेचर। it is same, it is same as the personal ID sometimes। okay, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल नंबर को ही यूजर आईडी भी बना देते हैं कि हाँ यही आपकी यूजर आईडी भी है, बट इन एन एक्चुअल इट्स डिफरेंट। सो यूजर आईडी इज ऑल्सो यूनिक वन, इट्स अ यूनिक लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी दोनों में बहुत डिफरेंस है। एम्प्लॉय आईडी अलग है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिक लॉगिन आईडी। यूनिक, ओके, हर एक की सेम नहीं होगी, हर एक की सेम नहीं होगी। सो मैं यहाँ पे हूँ डिस्प्ले। अब मुझे ये चेक करना है, अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें मेरे को दिखाई दे रही है। ये जो मेरी यूजर आईडी है ये किसने क्रिएट की थी? ये लेट्स से दिव्या नाम की कोई पर्सन है उसने क्रिएट की थी। ये दिव्या भी एक अलग से किसी की यूजर आईडी है, ओके, सिस्टम के अंदर इसने क्रिएट की थी। नाउ यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं मेरी पर्सनल डिटेल्स भी देख सकता हूँ। लॉग ऑन डेटा, सी देर आर थिंग्स लाइक लॉग ऑन डेटा, दिस इज अ पासवर्ड स्टेटस ऑल्सो आई कैन चेक फ्रॉम हियर, इट इज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। SNC default, now there are things which is known as parameters। पैरामीटर्स, अब देखो पैरामीटर्स के अंदर भी मैं एक और चीज़ें होती है कि मैं किस कंट्री रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को कर रहा हूँ। अभी मैं 40 मतलब इंडिया, यूएस के लिए होता है 10, कनाडा के लिए होता है 7। सो सिमिलरली आई एम डूइंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच इज रिलेटेड टू इंडिया। अब कहाँ पे मैं देख सकता हूँ वो सारी के सारी प्रोफाइल्स मेरी जो कि मुझे असाइन की गई हैं हियर। सो कैन यू सी SAP all what it means? All SAP system authorizations, मतलब मैं चाहूँ तो कोई भी टी कोड यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। If I want I can use SE38 also, which is much more related to ABAP or things like that। Any doubts so far in this one? क्या हो रहा है यहाँ पे सिस्टम में? हो क्या रहा है कि एक यूजर आईडी है, वो यूजर आईडी जिसके ऊपर मैं लॉगिन करके बैठा हुआ हूँ उसको एक स्पेसिफिक प्रोफाइल असाइन की जाती है जिसके थ्रू वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कोड्स को यूज कर सकता है। अब अगर ये सिस्टम, अगर अभी ये तो देखो डेमो सिस्टम है, बट इन अ रियल टाइम अगर ये प्रोडक्शन सिस्टम होता है ना तो उसमें किसी को भी ऑल नहीं होती है। यू विल हैव अ स्पेसिफिक यूजर आईडीज, स्पेसिफिक यूजर आईडीज ही आपको असाइन की जाएंगी। जैसे अगर कोई टेस्टर होगा तो उसको टेस्ट रिलेटेड यूजर आईडीज ही असाइन की जाएंगी, उसको कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड यूजर आईडीज भी असाइन नहीं की जाएंगी डेवलपमेंट के अंदर।
अब अगर जैसे अगर मैं मान लो कि अभी तो ये वाली यूजर आईडी में देख रहा हूँ, लेट्स से आई वांट टू चेक सम अनदर यूजर आईडी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके स्टार करके मैं चेक करता हूँ और कौन कौन सी यूजर आईडी सिस्टम में अवेलेबल है. सो एज ऑफ नाउ आई कैन सी दैट देर आर दीज मेनी यूजर आईडीज विच आर अवेलेबल इन सिस्टम. इतनी सारी यूजर आईडीज अवेलेबल है सिस्टम के अंदर. लेट अस टेक एनी ऑफ द यूजर आईडी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कोई डिफरेंस है क्या. सो लेट्स टेक दिस वन, डिस्प्ले. लेट्स गो इनटू द प्रोफाइल. अच्छा, इसको भी सारा के सारा ऑथराइजेशन दिया हुआ है. सी, बिकॉज दिस इज अ डेमो सिस्टम. नाउ लेट्स डू दिस थिंग. लेट्स कम आउट ऑफ दिस सिस्टम. लेट्स गो टू द अदर सिस्टम दैट आई वाज यूजिंग. ओके, जिसके अंदर मैं पीएफसीजी को एक्सेस नहीं कर पा रहा था. लेट मी गो इनटू दिस वन. यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरे को क्या देखो, मैं तो ये भी चेक नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक के. यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज SU01D which I was able to access in the other with the other user ID. So मेरे को एक अलग तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा. Let me see if I can check my own data. Yeah. So see, यहाँ पे मेरे को रोल ऑथराइजेशंस दिया हुआ ही नहीं है इन्होंने. मैं चेक भी नहीं कर सकता कि मेरे पास में ऑथराइजेशन किस तरह का है. Why? दिस इज एज गुड एज एंड यूजर आईडी. अच्छा, एंड यूजर कौन होते हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है. वो आर द एंड यूजर्स. एंड यूजर्स कौन होते हैं? Who are the end users? People who uses the system, or the users who will use the system. और कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? शिवानी, साक्षी, कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? The one who configures the system for users. Configures the system for user related needs. Correct? Yes, sir. So this will give you the very good idea that like here in this case, I'm not being able to utilize some of these transactions. Here I'm not being able to utilize some of these transactions. Why? Because so that I could not be able to change anything which are available in those transactions. उसके अंदर जो भी available है मैं उसको change नहीं कर पाऊँ. इसी के लिए ये authorization provide किया जाता है. And who does all of those things? ये कौन करता है system के अंदर? Consultancy. It is generally done by basis consultant. Authorizations are generally done by basis consultants. Generally, okay. In some cases, HR related authorization HR team भी करती है, और like HCM consultants भी करते हैं. Generally done by SAP basis consultants. But still I am showing you because आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज का ऑथराइजेशन नहीं होता है, सो व्हाट इट एक्चुअली मींस. एंड सारी के सारी चीजें डेवलपमेंट, क्वालिटी और प्रोडक्शन के अंदर क्यों सेग्रीगेट की जाती है, क्योंकि दिस इज द सिस्टम वी आर लाइवली यूजिंग इट फॉर ऑल ऑफ दीज 10,000 एम्प्लॉइज या जितने भी सिस्टम के अंदर एम्प्लॉइज हैं. दीज आर फॉर द टेस्टिंग सिस्टम. टेस्टिंग सिस्टम के अंदर जब मैं चीज़ों को यूज़ करता हूँ तब मैं कोई एक्चुअल में सैलरी थोड़ी ना फॉरवर्ड करता हूँ एम्प्लॉइज को, या मैं सिर्फ उनके टैक्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे मालूम है. बट मैं एक्चुअल सैलरीज तो उनको फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं प्रोडक्शन सिस्टम से ही करूंगा. Production. और अगर उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, तो अगर मान लो कि कुछ भी एक छोटी सी दिक्कत आ गई, लेट्स से $100 की, सॉरी लेट्स से ₹1,000 की, तो वो ₹1,000 एक्सीडेंटली मैं 10,000 एम्प्लॉइज को फॉरवर्ड नहीं कर दूं. अदरवाइज इट विल बी अ लॉस ऑफ लाइक व्हाट. कितना लॉस हो जाएगा? एक या 10 करोड़ का समथिंग कुछ लॉस हो जाएगा. So that's why it's very important that you don't perform any kind of a configurations in PRD. That's why everyone, that's why the restriction is, this type of a restriction is there in system. Okay. So Yes, sir. SU01. Let's go back to the other system. Let's understand what SU01 is all about. सो SU01D के अंदर मैं अपनी जो भी मेरे को प्रोफाइल के अंदर असाइंड है, PFCG जो भी रोल क्रिएटेड किया गया है, वो मेरे को ऑथराइजेशन SU01 के अंदर दिया जाता है. If I want, I can also be able to edit it over here. If I want to like
Let's say I want to edit it. तो मैं ये प्रोफाइल में जाके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से, दिस वन, एंड हियर इट इज अ डिलीट बटन. अगर मैं डिलीट करूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैं डिलीट करूंगा तो ये जितनी भी चीजें अभी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसी ऑथराइजेशन आईडी के साथ में ये सारी की सारी चीजें मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना. अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो मैं टी कोड यहाँ पे यूज कर ही नहीं पाऊंगा कोई सा भी. So it's a way you have to be very very careful. You don't have to delete or add anything over here. Otherwise your access will be in trouble. Either way, in some of the cases आपके पास में access ही नहीं होता है. But now let's understand PFCG. So let's go into the PFCG. And we just now saw a role. कौन सा रोल था? SAP underscore all. ये एक रोल था, right? Yes. ये एक रोल था. अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या चेक करना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो मेरी प्रोफाइल है SAP अंडरस्कोर ऑल या मान लो SAP अंडरस्कोर न्यू, ये जो दो तरह के रोल हैं ये एक्चुअल में इनका कॉन्फ़िगरेशन किया कैसे गया है, लाइक क्या क्या इसके अंदर अलाउ है, क्या क्या इसके अंदर अलाउ नहीं है. सो लेट्स सी दैट. I'm not sure if we can take this one only or let's try to see any another role as an example. Okay, let's remove this one. Let's take this one as of now. SAP underscore employee. Display. See, now I'm getting this part over here कि अगर मैं ये वाला रोल के अंदर मेरे को देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर किस किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन किया गया है और क्या क्या इसके अंदर ऑथराइजेशंस दिए गए हैं. सो आई कैन ऑल्सो बी एबल टू सी फ्रॉम हियर कि अब ये जो SAP, अब मान लो कि कोई एंड यूज़र है और उसको सिर्फ मैं खाली टाइम मैनेजमेंट और कुछ एक पर्टिकुलर टी कोड्स का ही एक्सेस देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ये चेक कर सकता हूँ कि वो ये सारे के सारे टी कोड्स को यूज़ कर सकता है. अब अगर मैं कुछ चाहूँ तो इसके अंदर मैं यहाँ से टी कोड्स को भी ऐड कर सकता हूँ एडिशनल एक्टिविटीज़ वगैरह के थ्रू. ये लाइक दिस पार्ट आई एम नॉट ऑथराइज्ड एज ऑफ नाउ, सो आई कैन नॉट ऐड इट, बट जनरली बेसिस पर्सन कैन ऐड एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ यूज केस. लेट्स से कि आप कह रहे हो कि ठीक है सिस्टम के अंदर एक यूजर है, मुझे उसको खाली चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का ही एक्सेस देना है. आई डोंट वांट टू प्रोवाइड हिम एनी काइंड ऑफ एन एक्सेस विच इज रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन. डेवलपमेंट सिस्टम में ही खाली यूजर को मेरे को एक्सेस देना है, पर मेरे को उसको कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस नहीं देना है. सो आई टेक दिस रोल and what I will do, I'll assign, let's say I am that user, so I'll assign this role over here to that person or over here. तो मैं उसको डायरेक्टली वहां पे ये रोल असाइन कर दूंगा. तो जैसे ही मैं उसको असाइन करूंगा, सो दिस पर्सन विल हैव अ स्पेसिफिक एक्सेस टू पर्टिकुलर टी कोड्स जो उस रोल के अंदर मेंशन्ड है. ये इस रोल के अंदर जितने टी कोड्स मेंशन्ड है उसको सिर्फ इसी का ही एक्सेस रहेगा, उसको और किसी चीज का एक्सेस रहेगा ही नहीं सिस्टम के अंदर. अच्छा, अब अगर मुझे यही यूजर आईडी उठा के उस यूजर को असाइन करनी है जो सिस्टम में है, तो ये मैं कहाँ करूंगा? मतलब वेयर दिस यूजर आईडी इज गेटिंग लिंक्ड विथ यूजर, कहाँ पे लिंक हो रही है? ये भी इन्फो टाइप के अंदर ही लिंक होती है. लेट्स से आई एम गोइंग टू द PA30 एंड एक काम करते हैं, मैं मेरी यूजर आईडी लेने के बजाय किसी और की यूजर आईडी लेके उसके अंदर एक डेमो दिखाता हूँ. अदरवाइज पता नहीं मेरी यूजर आईडी फिर चले नहीं चले. So this is a different types of roles. So to check other user ID, let's do this thing. Let us go into the SU01 and we were having this user ID, right? अपन ने check किया था. Or if we want, we can take this another user ID. Let's put a star and let's see what all are the user IDs which are available.
So there are these many user IDs which on this demo system people are actually using. So let's say I'm selecting any one user ID. Let's say I'm taking this one. Let's say we take this one, admin O01. Let's note it down over here. Example user ID, admin O01. अब ये यूजर आईडी बैकएंड में मैं कैसे असाइन करूंगा एम्प्लॉइज को? सो जनरली सिस्टम के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज रहते हैं उनको अगर मुझे किसी को भी किसी की यूजर आईडी चेंज करनी हो या अगर उनको कोई यूजर आईडी मुझे असाइन करनी हो, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस एम्प्लॉय, ओके, उनकी अगर मुझे यूजर आईडी चेंज करनी हो या उनको अगर यूजर आईडी असाइन करनी हो, सो आई विल गो इनटू द कम्युनिकेशन इन्फो टाइप. दैट कम्युनिकेशन इन्फो टाइप इज 105. Enter. Okay, this communication info type is also stores your email ID. आपकी ईमेल आईडी भी कम्युनिकेशन इन्फो टाइप के अंदर ही स्टोर होती है. अच्छा, अगर मुझे ईमेल आईडी चेक करनी है या अगर यूजर आईडी चेक करनी है तो कहां से देखूंगा? आई विल गो इनटू द सब टाइप, एंड इन सब टाइप आई कैन सी दैट SAP सिस्टम यूजर आईडी, email ID, is it a phone or is it any another LinkedIn ID or is it any another ID related to it? Acha, if I want, I can create these different IDs as well. These are the standard ones which SAP provides me, up to 30 or something. But if I want a custom specific user ID, I can also maintain for the information purpose. So let's say here I want to save the user ID. ये employee को मेरे को admin O01 assign करना है. So let's see first if इसकी कोई user ID है क्या. So as of now he has no user ID. So create. Save this one. Okay. Now let us go back to SU01D. And I'm accessing, I want to check this user ID once again. Log on data. See. So अब ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये जितने भी रोल्स हैं या जितनी भी उसकी प्रोफाइल एक्सेस है, उस एम्प्लॉय को मैंने वो सारी के सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी. अब इससे देखो क्या होगा. अगर मान लो कि मेरे को उस एम्प्लॉय की डिटेल्स में जाना भी है, अभी जैसे कि एम्प्लॉय नंबर क्या था उसका 17 था. अब लेट्स से आई वांट टू एक्सेस दिस एम्प्लॉय डिटेल एज पर द लॉगिन आईडी आल्सो. 17 एम्प्लॉय आईडी थी. आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग ओवर हियर. मेरे को अब लॉगिन आईडी से चेक करना है सिस्टम के अंदर कि वो एम्प्लॉय कौन सा है. सो वन सेकेंड. Where are those fields? Let's see if we can be able to do that or not. Yeah. Anyway, शायद इस सिस्टम के अंदर नहीं हो रहा है. I wanted to search it. Let me see if it is. Yeah, it is not allowing me to search from here in this system. Ideally वो ऐसे होता है. Let me log into some another system to show that part.
So PA30. Okay. Uh, yeah. So here we can see all of these records. So generally क्या होता है कि अगर लाइक उस सिस्टम के अंदर ये रिकॉर्ड्स फैचअप नहीं हो रहे हैं, बट जनरली आई कैन फाइंड अ कम्युनिकेशन इन्फो टाइप ओवर हियर, एंड मैं अगर चाहूँ तो खाली लॉगिन एंट्री के थ्रू भी सिस्टम के अंदर देख सकता हूँ कि वो लॉगिन एंट्री किस पर्टिकुलर लॉगिन आईडी पर्टिकुलरली किस एम्प्लॉय को बिलोंग करती है. ओके. बट आई होप यू अंडरस्टैंड लाइक कि सेग्रीगेशन क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर और यूजर आईडी का क्या यूज केस है. लाइक अ यूजर आईडी इज नथिंग बट और एसएपी लॉगिन आईडी इज नथिंग बट इट इज असाइंड टू द डिफरेंट एम्प्लॉइज, एंड दिस इज ऑल्सो यूनिक इन नेचर. और हर एक यूजर आईडी को अलग अलग तरह के रोल्स असाइन किए जाते हैं कहाँ पे, पीएफसीजी के अंदर. एंड वही रोल्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि लेट्स से आई हैव क्रिएटेड अ रोल नंबर ओवर हियर. Let's say I've created a different types of roles over here. I've created role number one, which is SAP All Access. Similarly, we can also create SAP Time Access, only time related access. Similarly, the other roles can also be created. Let's say SAP Payroll related access. Okay, and then these accesses can be, let's say this is 17 HCM1, something like that. Let's say this is 17 HCM02, something like that. So these different types of user IDs can contain these different types of roles. Okay, and then these user IDs in an info type 105 can be assigned to employees. तब जब वो एम्प्लॉय जाके अगर एसएपी सिस्टम पे लॉग इन करेगा, सो ही कैन ओनली बी एबल टू व्यू दोस टी कोड्स जो कि उसका रोल ऑथराइजेशन उसको अलाउ करता है. He cannot be able to view any another T code. Okay, any doubts? No,